Welcome to Acme Classes Simply Science, a one-stop channel जहाँ पर आपके क्लास 9th और 10th से related topics of science are discussed in very simplified, easy terms which are easy to understand. Please be noted that this does not relate to classes 11th and 12th. It is oversimplification of concepts made for children to understand them at the level of class 9 and 10. With that in mind, let's begin part 4 of the series of 4 videos on electricity, wherein today we discuss the concept of resistivity. Now, what is resistivity? To understand that, please refer to video number 3 in the series of 4, wherein we discussed that resistance is directly proportional to the length of the conductor and resistance is inversely proportional to the area of cross-section. Now, if you were to combine these 2 points, we could say resistance is directly proportional to L upon A. If I have to remove the sign of proportionality and put an equality sign, I need to put a constant. This constant is rho, symbol is rho, the concept is resistivity. The resistance is equal to resistivity into L upon A. In other words, rho is equal to resistance into A upon L, where resistivity is a constant. Please understand, we put in, instead of proportionality, we had to put in equality, and because we wanted to put equality, we put in a constant. So resistivity is a constant. Now, but what does resistivity mean still? The meaning is still not clear to me. If it's not clear to me, it's not clear to you either. So the units for resistance, as discussed before, are resistance is ohms, area is meter square, length is meter, because in physics the standard unit of length is meters. So meter cancels with the square, you get ohm meter. So resistivity units are ohm meter. Still, it may not be clear as to what do you mean by resistivity. So let's take an example. So let's say resistivity is equal to R into A upon L. Let's take a cube. Now this cube has all 3 sides equal, being a cube. Let's take the side of this cube to be 1 meter. So it's a unit cube. Unit cube means every side का जो length है वो 1 meter है. तो इस side का area क्या होगा? Length is 1 meter, height is 1 meter. Area of this side is equal to 1 into 1, 1 meter into 1 meter, which is 1 meter square. So in place of area, I put 1 square, 1 meter square. And in case of length, if the current was to flow across this space from this end to this end, it will travel a distance of 1 meter. So length of the conductor here is 1. So if we cancel out 1 and 1, resistivity comes out to be equal to resistance. So यहाँ से resistivity का मतलब clear होना शुरू होता है. Resistivity का मतलब है that it is equal to resistance. Is it equal to resistance in every case? Not really. ये सब तभी resistance के बराबर होगी जब आप एक ऐसा कंडक्टर लेंगे जिसकी एक शेप पहली बात तो क्यूब के जैसी हो और क्यूब की लेंथ, साइड लेंथ 1 मीटर हो, यूनिट क्यूब. सो सिर्फ उस सिचुएशन में रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर आती है जहां पे आप यूनिट क्यूब कंडक्टर लेते हैं, सिलिंड्रिकल कंडक्टर नहीं लेते हैं. और दैट मींस हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है. हर सिचुएशन में रेजिस्टेंस है नहीं, ये तभी रेजिस्टेंस है जब ये एक वायर होगी जिसकी यूनिट लेंथ होगी और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जो कि तभी पॉसिबल है जब आप शेप लेते हैं क्यूबिकल फॉर्म के अंदर. तो resistivity is a case of specific resistance. Resistivity is specific resistance. It is related to a specific situation and not all situations. So the term resistivity is a narrow term, resistance is a wider term. So resistivity is resistance provided the current is flowing through a conductor which has 1 unit in length and 1 unit area of cross section. I hope now the meaning of resistivity is clear. So let's take 3 examples. We take 1 unit cube of copper, 1 unit cube of gold, 1 unit cube of iron, and temperature 25 degrees Celsius. Now, assuming current is passing perpendicularly through the 2 faces of the cube, and please be noted that the current has to pass perpendicularly between the 2 faces of the cube, because if it was non-perpendicular, then the length traveled by the current will not be 1 meter. ये length को 1 meter रखने के लिए ये जो current का flow है सरफेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, मींस ये इसके पैरेलल होना चाहिए बेस के. सो अब ये तीनों क्यूब्स का साइज सेम है या डिफरेंट है? तीनों यूनिट क्यूब्स हैं, तीनों का लेंथ h1 मीटर है,
ये एरिया भी 1 मीटर है, ये एरिया भी 1 मीटर है, ये एरिया भी 1 मीटर है। तो तीनों के एरियाज इक्वल है या अनइक्वल है? क्लियरली तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है। तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इक्वल है तो तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल सेम आना चाहिए, डिफरेंट तो आना नहीं चाहिए, बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इक्वल है तो तीनों का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तीनों के थ्रू करंट पास करता है 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर के थ्रू, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी तीनों में सेम है, एरिया भी तीनों का सेम है। तो ये दोनों फैक्टर्स रेजिस्टेंस के तीनों इवेंट्स में सेम है, तीनों कॉपर, गोल्ड और आयरन के केसेस में सेम है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। थर्ड फैक्टर जो हमने वीडियो नंबर 3 में डिस्कस किया था, टेम्परेचर, तीनों को हम सेम टेम्परेचर पे रख रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर सेम रख रहे हैं, एरिया सेम रख रहे हैं, लेंथ भी सेम रख रहे हैं, तीनों फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस सेम रख रहे हैं, फिर तो रेजिस्टेंस सेम आनी चाहिए, दैट मींस तीनों का रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी क्यों बोल रहा हूं, अभी समझाया कि रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी इन अ सिचुएशन जहां पे आप 1 यूनिट क्यूब लेते हैं। तो तीनों का रेजिस्टिविटी, तीनों का रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए। बट अगर आप अपनी बुक्स खोल के देखो, तीनों का रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। ये कैसे पॉसिबल है? सो तीनों कंडक्टर्स का लेंथ सेम है, तीनों कंडक्टर्स का एरिया सेम है, तीनों कंडक्टर्स का टेम्परेचर सेम है, still resistance is different. Why? Then the fourth factor comes into play. It is due to the nature of the material. Copper, gold and iron are 3 different sorts of materials. It is the nature of the material that resistivity depends upon. That means resistance का fourth factor है nature of material. Nature of material एक qualitative factor है, quantitative factor नहीं है, इसलिए उसको इस वीडियो में डिस्कस किया, लास्ट वीडियो में नहीं। So resistivity does not depend upon temperature. Resistivity does not depend upon area of cross section. Resistivity does not depend upon the length of the conductor through which the current passes, the temperature or the area. It only depends upon the nature of the material. I hope this concept of resistivity is clear. To summarize, resistance is resistivity when current passes through a conductor of length 1 meter and unit area of cross section, which only is possible in case the shape of the conductor is a cube of 1 meter in size, h. With this, we come to the end of the 4-part series of videos on electricity. I hope you liked all what we had to share. And in case you missed out on the other videos, this is the list. Links for which are provided in the detailed description below. And if you do like our videos, in the end, I would like to say please like, subscribe, share, comment, and press the bell icon. Thank you and have a nice day. Good luck.